Yeah, good morning, friends. Welcome to the session. I guess today I'm late by a minute. Pardon me for that. I think camera set कर रहा था मैं. So कल एक sharp dip आया specifically बैंक निफ्टी में जो कि एक मॉर्निंग आवर में देखने मिला. And if you are all aware of it, what we have been following is the 200-day moving average. जैसे कल भी हमने देखा था कि एक 200 DMA पे एक लाइन ड्रॉप कर दो. देखिए जैसे इंपॉर्टेंट एवरेजेस टूटती है ना कहीं बड़े ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस ट्रिगर होते हैं या तो कहीं ना कहीं एक शॉर्ट आ जाती है जो कि एल्गो ड्रिवन शॉर्ट्स रहती है. सो सच डिप्स आर पार्ट ऑफ दिस. बी अवेयर ऑफ दिस. ऐसे डिप्स आती है. हाय इंजमाम, हाउ आर यू मैन? फाइन. सो लेट्स स्टार्ट. क्या बहुत बड़ा एक स्ट्रक्चरल डैमेज हुआ मार्केट में? द आंसर इज नो. But we'll keep this specific to day's trading. Now, I'll just read out the disclaimer. This is for educational and informational purposes only and does not constitute financial advice. So, देखते हैं आज के दिन 12 तारीख को क्या लग रहा मार्केट in context of the data points which are of index volatility, FI figures and the global markets. आज से हम क्या करेंगे? From the sentiment perspective, we will also follow the FI figures. Does it make that huge a difference? एक sentiment समझ में आता है. So that's the change we are making, and slowly we are going to make few changes in our trading titan sessions. So let's start first. Look at the global headlines. अभी भी क्या बोल रहे हैं? Wall Street steady with CPI data. Hormuz risk in focus. Iran will be there for few days, I guess, because of crude थोड़ा limelight में आ जाता है, and it's not going to leave us. तो इसके साथ we as a trader will have to live with it. कल अगर यूएस मार्केट्स देखें तो मोर और लेस 0.34 का कट से क्लोज हुआ 184 पॉइंट्स. फ्यूचर्स आर स्टेडी. दैट्स व्हाट वी वांट टू सी. फ्यूचर्स आर स्टेडी राइट नाउ. कहीं एशिया में देख रहे थे कि बहुत बड़ा गड़बड़ तो नहीं है. यस, इट स्टार्टेड. गोरखा क्लब इट स्टार्टेड. सर, आर यू ऑल गेटिंग माय ऑडियो एंड वीडियो लाउड एंड क्लियर? Just confirm it to me. Inzamam? Yeah, Kaustam, am I clear? Good. So futures more or less in track है. कुछ बहुत बड़ा तेजी मंदी नहीं है वर्ल्ड में. बोवेस्पा जो कि ब्राजील है 2% डाउन है. इससे मेटल में एक प्रेशर आ सकता है. निकाई इज फ्लैट. हैंगसेंग इज 200 पॉइंट्स माइनस. थोड़ा कट है. सो मार्केट में नथिंग वेरी नेगेटिव, नथिंग वेरी पॉजिटिव. मार्केट विल बी ट्रेडिंग ऑन इट्स ओन प्राइस एक्शन. तो देखिए कल ट्रेडर्स के स्टॉप्स ट्रिगर होंगे. एनीथिंग कुड हैपन बिकॉज देयर इज नो बिग FIs figures and DI figures for selling. After this, we follow a plan, we follow a process of trading. First, we go and check crude. अभी crude check करेंगे. Why? Because the Hormuz is again coming into picture. So crude has reached the daily resistance. जहां से गिरा था वहां पे crude आ गया. Hormuz चल रहा है. Shabaki, like India, you have majority of the weightage in banks and Reliance. Brazil index, Bovespa, is more of a metal index. Their heavyweights are all metal stocks. Got it, Shabaki? Okay. So crude has come to here. Important रहेगा ये देखने के लिए crude में ये gap. And now let's follow the channel in crude. एक बार channel बन जाती तो हम उसको follow करेंगे. यार नमस्ते कमलेश जी. So crude is channelized, ticking up. एक बार crude channel तोड़ता है, then once again we'll see crude towards this low. देखिए nothing move in one straight line. बीच बीच में जैसे हार्मोज न्यूज में आता है, crude एक spike दे देता है. So crude is currently up at as a resistance. That's how crudes के price charts दिखा रहे. After that, let's go and check India VIX.
देखिए इंडिया विक्स रेंज बाउंड वॉलेटिलिटी दिखा रही है, गेटिंग माय पॉइंट। तो एज अ ट्रेडर जब भी इंडिया विक्स इस तरह की रेंज में आता है ना, भी मेंटली प्रिपेयर्ड, शेकआउट्स भी रहेंगे, शार्प अप मूव्स भी रहेंगे। इंट्रा वीक बहुत हाई वॉलेटिलिटी रहेगी। व्हाई? बिकॉज विक्स इज नाइदर गोइंग अप नॉ कमिंग डाउन, एक रेंज में। इफ यू आर वंडरिंग ये क्यों हो रहा है कि कल मार्केट एक बार नीचे चला गया, इसके एक दिन पहले ऊपर चला गया, व्हाई सच थिंग्स इज हैपनिंग इज बिकॉज विक्स इज स्टक इन अ रेंज एंड इन अ लो वोलेटाइल रेंज। 11-12 का लेवल हम जिसको लो वोलेटाइल रिजीम बोलते हैं। सो दिस विल कंटिन्यू फ्रेंड्स। इंपॉर्टेंट टू सी क्या विक्स ये हाई तोड़ रहा है। इफ इट स्टिल इज नॉट ब्रेकिंग दिस हाई, any lower level support is a decent enough swing down or a pullback, which says that right now we are seeing only a corrective decline, not start of any downtrend. Yeah, Dheeraj. सो विक्स जब तक ये हाई नहीं क्रॉस कर रहा, इट्स ओके, मार्केट में डिप डाउन, कम टू द सपोर्ट्स, शो द वॉलेटिलिटी, इंट्रा वीक में अफरा तफरी होगी, बी प्रिपेयर्ड फॉर इट, नथिंग मोर देन दैट विक्स इज शोइंग राइट नाउ। आफ्टर दिस लेट्स गो टू सी। देखिए गिफ्ट निफ्टी का सिर्फ ओपन देखिए, पूरा दिन मत देखिए, इट जस्ट गिव्स द ओपनिंग हिंट, समटाइम्स इट डजंट इवन फॉलो। बट आदत पड़ गई है तो देख लेते, अदरवाइज विल फील कोई एक डेटा पॉइंट मिस कर रहा है। So just remove that from your mindset. We just go and check the VIX. So VIX right now is up 50 plus points. So more or less now markets को हमको इस उसके strength पे देखना पड़ेगा. So this is Nifty. 200 exponential Nifty ने तोड़ दिया. Drop a line over there. Why line over there? Because जो supports टूटते हैं वो next दिन अगर market stable रहता है, and if it crosses there, that level itself is a level intraday spike आ जाता है, and that level was 200-day exponential moving average. Sorry, I'll have to plot the exponential. हम दोनों exponential और simple दोनों अभी देख रहे हैं. So the 200-day exponential moving average अभी तक निफ्टी ने तोड़ा नहीं, तो मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉप कर देता हूँ। कल ये टूटेगा, फिर हम एक शार्प डिप देख सकते हैं, विच इज शार्प डिप मतलब क्या, यहाँ आते ही 100 पॉइंट तो निकल जा रहा है, तो अनदर 50, 80, 100 पॉइंट्स। सो लेट दिस लाइन बी रनिंग ऑन योर प्राइस चार्ट्स। इंट्राडे में फोकस करिए, इफ इंपॉर्टेंट एवरेजेस आर रनिंग अक्रॉस योर प्राइस चार्ट्स, बी अवेयर ऑफ इट। देन वी गो टू 60 मिनट्स टाइम फ्रेम, इसको हम बोलते हैं मल्टीपल टाइम फ्रेम, व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ। 60 minutes में just see we have a gap plus the 200-day exponential average. So this becomes my support level. पूरा range ले लेता हूँ, even yesterday market came till here, मैं पूरा gap ले लेता हूँ till which has been covered, and then we look for a resistance. देखिए resistance will always be from where it declined. ये जो high है, परसों का high और consolidation है, that's your resistance. So then things are sorted as far as Nifty is concerned, where the demand is, where the supply is. Everybody clear? क्या मार्केट और नीचे जा सकता है यहाँ पर? अगर ये लेवल टूट जाता then it's possible, or else we might see some range. उसके बाद we go to 15 minutes. 15 minutes पे we further fine tune. ये गैप यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो we mark this gap over here. रेजिस्टेंस में कोई चेंज नहीं है, and we mark one more lower support, which is the origin of this move, which is somewhere here. So which is 24,200. देखिए इतना नीचे आएगा नहीं आएगा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, बट गिवन द वॉलेटिलिटी सडनली जैसे कल खुल गई थी, तो हमें प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। कल हमने ये लेवल भी मार्क किया था और ये भी मार्क किया था, तो ये बैकअप लेवल है, ये प्राइमरी लेवल है। ओके, नाउ आफ्टर दिस व्हाट? अगर गैप अप खुलता है तो विल मार्केट सस्टेन एंड गो ऑल द वे अप टिल हियर? करंटली लुक्स टफ। नाउ हाउ टू डू दैट? देखिए गैप अप अगर मार्केट खुल रहा है तो कल मार्केट, देखिए प्रीवियस डे के अगर आपको चार्ट्स पे, अगेन रिमेंबर, नोट डाउन दिस इन योर ट्रेडिंग डायरी और अ जर्नल,
If on previous day, if you have seen some very big red candle or a very big green candle, be aware of it. That's where the buyers or the sellers or the demand or the supply or the support or the resistance is. So after this big decline, market paused over here. तो उसके बाद कोई बड़े seller आए नहीं. So ये सब pivot points हो जाते हैं. So I would just drop a line over here. Pivot points मतलब market यहाँ पे एक struggle mode में जा सकता है. वही गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं गैप अप यहाँ पे खुल जाएगा. गॉट इट. दीज आर योर पिवट पॉइंट्स, रेफरेंस पॉइंट्स. कि यहाँ तक तो एग्जॉशन मूव रहता, अगर बहुत एक अगले दिन सेलिंग होगी, द एग्जॉशन इटसेल्फ ब्रिंग्स इट बैक टू दोस लेवल्स. So that's how the pivot point is. And apart from this, can we do anything more in this price charts? My answer is no. After that, today see, you'll have to follow two things. Number one, VWAP. How many of you are following VWAP? And number two, बिकॉज सी अगर प्रीवियस डे मार्केट गिरता है ना, तो कोई भी मोमेंटम सिस्टम रहती है, जैसे मैं एमएमए फॉलो करता हूँ, मल्टीपल मूविंग एवरेज, इट हैज लॉट्स ऑफ रेलेवेंस. दीज टू यू पुट इन माइंड. आई एम ओके, दैट्स ग्रेट. Arif says VIX is very low. Bounce can, yeah, if it can be expected. But low VIX में भी sharp dips आएंगे आरिफ. So blindly मत follow करो कि फिर levels to levels जाओ आरिफ. So this is how my Nifty is for the day. I am very clear. These are the two things I am going to use. If somebody is worried what is an MMA, so please go and have a look at some of the videos I have explained in great detail about the multiple moving average trading system. आप 5 मिनट चार्ट्स पे लगा सकते हैं. आफ्टर दिस लेट्स गो टू गिफ्ट बैंक निफ्टी. देखिए बैंक निफ्टी ने कल जो लेवल तोड़ा वो काफी इंपॉर्टेंट लेवल था, विच वॉज अ पर्टिकुलर एवरेज, विच वॉज द 200 डे. फिर भी एक टेल बना. एटलीस्ट लोअर लेवल्स पे एक चीज तो आ रहा है कि बैंक निफ्टी में लोअर लेवल्स पे एक बार गिर के संभल जा रहा है. तो रिलेंटलेस डिक्लाइन नहीं है कि 700 800 1000 पॉइंट वाली. थोड़ा प्रेशर है, झेलना पड़ेगा. जियो इसके साथ प्लान आउट करो और थोड़ा कॉशियसली ट्रेड करो. देखिए बैंक निफ्टी ने जैसे कल इंट्राडे में लेवल तोड़ा, हमने कल डिसाइड किया था यहाँ पे एक मार्क कर देंगे. अभी मैं लेवल हटा देता हूँ. इफ आई गो टू 15 मिनट्स, ये खुला इसके नीचे, फिर सपोर्ट लेके वापस एक पुल बैक एवरेज तक आ गया. गेटिंग माई पॉइंट. सो आपको ये वॉलेटिलिटी फ्रेंड्स झेलनी पड़ेगी. पैनिक मत करो, भाव को चेज मत करो, प्लान के हिसाब से जाओ. Volatility on the downside gives you fill on the support. Volatility on the upside gives you fills on your trade uh, on the short side. Simple as that. डरो मत volatility से. एंड अननेसली स्ट्रेस मत लो, एंग्जाइटी मत लो. वॉलेटिलिटी इज लाइक डिप्स आर देयर. पेशेंटली वेट करो, भाव से काम करो, कूद के माल मत लो. लेट योर लेवल्स कम, लेट योर प्राइस कम, लेट योर मोमेंटम टेल यू whether you are going to be a trade, there is a trade today or not. That thing you have to figure out. Don't panic and don't take stress. Volatility रहने वाली है. फाइन. अगर कल 200 डे तोड़ा, इफ यू सी लेवल्स हमने ये बनाया था, बट ये तो खुला इसके नीचे, तो कोई रेलेवेंस नहीं था. तो अल्टीमेटली इफ यू रिमेंबर वी हैड मार्क्ड लेवल हियर आल्सो. हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर दिस? ओपनिंग में इफ इट कम्स स्ट्रेट टू द सपोर्ट, इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी. लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर दैट. अगर यहाँ पे आप पैनिक करते हैं, नहीं निफ्टी नीचे गिर गया और नीचे जाएगा, लेट मी गो शॉर्ट, आपके स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाते. लेवल्स टू लेवल्स काम करो फ्रेंड्स, मार्केट रेंज में है. शबाकी says yes, नजीब says yes. लेवल्स टू लेवल्स काम करो. फाइन. तो 200 डे में रहने दे रहा हूँ. सो आई यूज माई, आई नेवर वॉयलेट मल्टीपल टाइम फ्रेम्स. तो फिर मैं 60 मिनट्स में जा रहा हूँ. इन 60 मिनट्स कैन आई मार्क एनी पैटर्न्स आउट देयर? नो. इट्स लोअर हाइज लोअर लोज, पुल बैक. देखिए अगर आज 200 डे क्रॉस करता है तो एक स्पाइक है. तो 60 मिनट्स में एटलीस्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर दे. ये एक बेस था बैंक निफ्टी का. लेट मी रिमूव दिस एंड बी वेरी क्लियर एंड स्पेसिफिक. ये बेस में कल तो मार्केट आया. अगर कुछ अनटूवर्ड होता है तो फिर ये नीचे वाले बेसिस काम में आ जाएंगे. तो हम एज अ सेकेंडरी 2 मार्क करते. देखिए रेजिस्टेंस में कल यहाँ से गिरा, खुलते ही सेलर्स आए
और यहाँ पे एक बेस बना, आप देख रहे हैं ये दोजी कैंडल है, फिर स्ट्रॉन्ग सेलर्स है, अ बिग रेड कैंडल सजेस्ट दैट दिस इज वेयर द सप्लाईज। तो इस तरह करके छोड़ देते बैंक निफ्टी। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आते हैं। ये जो लाइन है ना, आप चार्ट्स पे रहने दो, 200 डे मूविंग एवरेज। आई रिपीट, ऑल द ट्रेडर्स हु आर वाचिंग, प्लीज ड्रॉप अ लाइन ऑन योर इंट्राडे चार्ट्स एट 200 डे। 200 डे एक फलक्रम पॉइंट है, वॉलेटिलिटी दिखेगी आपको। एंड कल का जो पुल बैक था उसने एक फ्लैग का शेप ले लिया और चैनल, तो इसको भी रहने दो। देखिए ये ग्राइंड में क्या ऊपर तक जाता है या फ्लैग आज तोड़ता, दैट विल बी योर मोमेंटम ऑफ शार्प मूव्स। सो दिस इज हाउ माय बैंक निफ्टी इज टुडे। मैं थोड़ा शेप पूरा चार्ट अंदर ले लेता हूँ, यस। एंड फ्रॉम टुडे ऑन द सेंटिमेंट साइड्स वी आर फॉलोइंग द एफआई फिगर्स। हम लास्ट 5 दिन देखेंगे। परसों के दिन डीआई ने 1200 करोड़ का माल बेचा और एफआई ने करीब करीब 2000 करोड़ का माल लिया। बट उसके बाद भी कल मार्केट नीचे आया। बट कल देखिए एफआई का बाइंग था 260 करोड़ का, डीआई का बाइंग था 24 करोड़ का। तो कल अगर देखने जाए तो किसी का सेलिंग नहीं था। तो हो सकते है कोई स्टॉप लॉस ऑर्डर ट्रिगर हो, ट्रेडर्स ऑर्डर ट्रिगर हो, या किसी ने ओपनिंग में एक बड़ा ब्लॉक बेच दिया हो, समथिंग ऑफ दैट, बिकॉज इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी डज नॉट सजेस्ट दे वर सेलिंग फ्रॉम देयर साइड। ओके, so that's all from my side, friends. We'll again meet in the evening at 3:45. But before that, देखिए on Thursday, fine, I repeat, on Thursday I am doing a session with Ashish. If anybody know, Ashish is a great trader out there. How many of you know Ashish Kayal? He is a founder of Wave Strategy Advisors. And on 13th of August, we are going to have a discussion on waves and Elliots and markets and risk management. कैसे एक प्रोफेशनल ट्रेडर को अप्रोच रखना चाहिए, right? So, you know, yeah. So we are having a 1 hour session with him. So these are the guests we bring in the trading titan community for us to benefit from their experience. So I'll do one thing. मैं ये chat में डाल देता हूँ. Make sure everybody registers. And if somebody is interested, you can forward it to your trading friends or somebody in your family. Let's make our community of bigger, but with a like-minded people. यहाँ हमें honestly ऐसे लोगों को जमा नहीं करना है जिसको सट्टा करना. Somebody is interested in logic, somebody wants to learn, and somebody wants to be a very good member of a community. He is very most welcome, and we invite him to join us. So make sure you forward it. So how many of you are joining? Give me a yes or a no. It is going to be tomorrow, Thursday, 4:30. Registered? Yeah, I'll keep the link open. Make sure you can forward it to your friends, family members, or anybody, because Elliot आपने सुना नहीं है, first time हम Elliot में कर रहे. Great. So I've given you the link. Make sure you register for the sessions. Okay. So that's all from my side, friends. Thanks. Have a nice day.